Okay, till now we don't have anyone watching. It's showing zero still. Okay, let's wait for 1 or 2 minutes, then we can start. Okay, 13 watching now. Great, great. Uh, okay, guys. So let's just start with the podcast. So, like, this is our first podcast on Go Carriers, and for the first podcast we have Nana. So she is from our college only. That is JP, and currently she's working as an SD at Google. And before that, she has interned with Amazon as well as Microsoft. So I guess you interned with Amazon in fourth year and in Microsoft in third year, right? Yeah. Great, great, great. So today, what we will do, like, I'll just give you a gist about it. Like today, we will know what Nana did in her college and what domains she explored in coding, and what was her, you can say, a kind of preparation strategy for getting placed in such good companies. So, and guys, if you have any questions regarding any topic, or if you need any sort of guidance, what you can do is you can drop your questions in the comments, and after that, after the session is over, we will pick that questions, and like we will have a kind of a Q&A over there. Okay. So, and I'll request all of you to share this stream with your friends and in other groups so that they can also get benefited with this. So, yeah, because we want to get more and more audience for this. Yeah. So, yeah, let's start, Nana. Okay. So, first of all, Nana, can you just, like, I have given a bit of introduction of yours. Can you just give a small introduction again? Yeah. Like, yeah. Firstly, thanks Go Careers for having me, and it is really great to hear and present my thoughts. So, hello everyone. I am Naina Gupta. I am currently working as a software engineer in Google Bangalore, and like I completed my graduation from JP in specialization in computer science this year Mhm. only, to Okay. 2021, and so before joining to Google, I interned at Amazon for 6 months. And before that, in the summer breaks after the third year, I also interned at Microsoft for 2 months. And yeah, so that's all about me. Okay, great, great, Nana. So I guess all of you have like now must have known about Nana, like what she did in her college and where she has worked. So now what we will do, first of all, let's just start with different questions. Okay, that we got from the Telegram. Okay, so like the very first question, Nana, I want to ask is like, let's say like when you joined the college. Okay, so during those 4 years, like what you have explored till now. Okay, like what was your kind of a journey like you did in first, second, and all your years, and what you explored in like college? Basically, I just want to ask that. Okay. So like before coming to college, I had a like brief, like we can say I was beginner in coding already because in 11th and 12th I was already studying C++ as a part of my academics syllabus. And in the beginning, it doesn't feel very difficult to me to start coding in the first year. Like Mhm, I see like my other friends were facing some difficulties in the programming in the initial stage, but mhm. because I was studying since last 2 years, so it Okay. doesn't seem very difficult. Mhm. So I utilized that time to explore more things. Like in the Okay. first year, I joined a hub for game development, and I Okay. started creating games on Unity engine. Mhm, And mhm. then first semester, I mainly did this. In the first year, second semester, I also joined like there are so many hubs in our college, Mhm. so there was a lot to explore. So later I joined robotics hub, in which I created one automatic robot. Okay. Okay. Great. Maybe you have heard line for LFR. Mhm, So mhm, after that, like I keep on exploring different hubs. Later, like in second year, I become the volunteer in IEEE hub in my college, IEEE mhm, student branch. mhm, And then I started mentoring students, like started teaching advanced C. And through this, like I got to meet too many people who did coding rigorously. mhm. So I also started doing coding
in my second year, like competitive programming I started Mhm. in second year. Okay. And my teacher was also very good, like Mhm. in my college teacher for algorithm and data structure. Mhm. So mostly like I mostly studied from him. I also refer one book, Mhm. Corman, Cormen Corman, which is really Okay. great. So Okay. I used to read, mostly I read and read about Mhm. topics. And in the Okay. fourth semester, like I started with little bit code chef. Mhm. And then like, so we can see in first year I didn't give much importance to coding. I Okay. explored various things. But Mhm. in second year I realized that I enjoy doing coding. So I Okay. started doing coding, and then in the summer break after second year, that was very important to me because Mhm. the whole summer break I did lots of coding, and as well as I learned machine learning. Oh, So great. like I attended one YouTube, I Mhm. followed one YouTube playlist by Mhm. Andrew NG. Okay. Yeah. And Yeah. it Mhm. was really great. So I got the very basics of machine learning. And Mhm. then after like, uh, so what happens when the third year starts after the Okay. summer break of second year, Mhm. company starts coming for the internship. Like Right. Right. Microsoft just came Mhm. after 1 month in the fifth semester in the beginning only. So Okay. because I prepared coding in summer break, Nana, just so want to clarify, like whether your Microsoft was on campus or it was off campus. I just want to ask that before. it was an off campus Okay. opportunity. Okay. Yeah, Mhm. I applied on their Mhm. portal, Mhm. Microsoft Career portal. Mhm. And then because I prepared it in the summer break, so it was not very difficult for me to do their coding question. And Okay. Okay. also in college we have to prepare some projects also. So because due to that machine learning thing, Mhm. which I prepared in summer break, I was also able to create some basics projects related to machine learning, which Mhm. also impacted my CGPA, and my CGPA improved. So Okay. then like after in sixth semester Mhm. I I again started working, like because in fifth semester only I Mhm. got to know that I am able to make Microsoft internship of Great. like I Yeah. able to get. So in sixth semester I didn't devote much time to coding, Okay. because now I think like I can explore something else. So I Mhm. started doing some web development, some projects I started uh, Okay. exploring. And Mhm. Mhm. then in the like after in the final year, Mhm. so for the placement, then in the final year I did regress coding, like in seventh semester, Mhm. when I have to prepare for Google interview. So Okay. Google demands really deep concepts. So in Right. seventh Right. semester, like I did lots of coding from lead code, interview bed, Mhm. code chef, Mhm. code forces. Mhm. And finally seventh my like because my internship started in my eighth semester only, so Mhm. my eighth semester was only 1 month long. Oh. So Yeah. that was completely full of college curriculum only. Mhm. And finally like I graduated Okay. in this year's January, and then I did started with my 6 months Amazon internship. Okay. Okay. Great. 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 So I guess, guys, like Nana told, like her journey of college, what she did. So yeah, it was in like more depth, and I hope like you got the idea what she did in each and every year, what domains she explored. Okay. So now let's come to the like topic. Like let's come to the point like where you got internship in Microsoft, Amazon, and Google. Okay. So like you told that for Microsoft, like it was an off-campus opportunity. Okay. And where did you went to go? Like where did you went to give the interviews, and how many rounds were there in the interviews? Okay, for Microsoft. Yeah. So yeah, Microsoft, like they first have one Mhm. like online Okay. coding test, which was Right. on Metal. Right. So it was a 45-minute test with three medium level question. Okay. And Okay. after clearing that, after 1 to 2 months, I Mhm. got a mail for one phone interview. Mhm. So in phone interview, also, there is one thing to notice that in internship, like compared to full time jobs, in internship companies like ask less difficult question. Right. Like for Mhm. full time job, they ask more difficult question, but Mhm. for internship, the difficulty level is like A bit low. comparatively low. Yeah, a Yeah, bit low. Yeah. Right. Right. comparatively Mhm. low. So Mhm. that's why there was not very much pressure to be very Mhm. good at that time. So I Mhm. was moderate in coding. Mhm. And so Microsoft asked normal like medium level question in the phone interview, and Mhm. after 2 to 3 months Mhm. they called me for the on-site interview. And Okay. like I had to go to Hyderabad. And Oh.
Okay. Yeah, at that time COVID didn't Yeah, start yeah, yeah. into. It was in 2019, right? Yeah, yeah. 2019. Yeah. Okay. So I went to Hyderabad, Mhm. and like everything was reimbursed by company only, all the Mhm. travel expenses. Okay. And then there were two on-site rounds, Mhm. one technical and one HR. Mhm. So it was really good. Like the interviewer were really friendly, Mhm. and in the technical round they asked me about like oops questions. Okay. He asked me puzzles, Mhm. and in the like last round he asked me about team spirit, about Okay. my projects. So Mhm. these kinds of questions were asked. Mhm. Mhm. So there were two rounds after your online test, right? Like 3 rounds, one Three phone rounds. Okay. interview. Okay. 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 Got it. Got it. Okay. Great. Great. And after that, you got selected in that, and it was a 2 months opportunity, right? 2 months internship. Yeah, Okay. 8 weeks. Okay, 8 weeks. Okay, okay, got it. Yeah. So yeah, like this was about Microsoft. Now let's come to the Amazon, like where you did 6 months intern after like in your like eighth semester basically, right? In your eighth semester, you did a 6 months intern. So can you let us know like about how did you got that Amazon opportunity, and yeah, about that. Yeah, so Amazon was not off campus, it was Mhm, in campus. My mhm. college, in my college, like Amazon, it was a special drive they came for, like they came for ACMS, Amazon Okay. Campus Mentorship Series, which Mhm, is mhm, like especially for women in tech. mhm, mhm, So for promoting women in tech, they come mhm, only for girls mhm, in the month, they like came around in the month of January in my fifth semester. mhm. So like at that time also college were open, so Okay. Yeah. we we gave one online test in the Mhm. college only, college labs, which Okay. consist of two coding question and some MCQs, Mhm, 20 MCQs, 10 to 20, mhm. and then after clearing that, they also provided us with 2 months mentorship opportunity, in which like we Okay. have, they used to teach us various concepts, and they also assigned us Okay. individual mentor, like they Mhm, created some team among girls. mhm, They mhm. assigned us some mentors, which you like, Oh. which help us creating some very So exciting projects. those mentors were from Amazon, right? They were Yeah, working yeah, in okay, okay, they great. were software engineers at Amazon only. Okay, So it okay. was really good like learning experience for me. Mhm. And after that, like after those like after mentorship, they had, because then COVID started, so the on-site interview converted to online interviews. Okay. Mhm, So I had 2 rounds of coding interviews mhm, on the same day only. mhm. So like these 2 rounds take place during my Microsoft internship only. Oh, So okay. I couldn't give much time to the preparation, Mhm, but like I had good preparation before. Like I was mhm, a little bit nervous, but mhm. yeah, my luck was good, and they ask in both round, they ask around 2 question each in each Okay. round, Mhm. one both medium level question, Okay, and okay. Mhm. around graphs and trees and DP. So Okay. these kind of questions they ask, and after 1 to 2 months, like my college announced the result. So Okay, great. Okay, like I guess, Nana, we would switch to Hindi and English now. Okay, otherwise our stream would be a little bit boring. Okay, so like you also cracked Google, right? Like तुमने Google भी crack किया. Okay, and like how, like when your process started for Google, okay, like आपने अप्लाई किया गूगल पे और यू वर रीच्ड आउट बाय सम रिक्रूटर और लाइक आपकी किक स्टार्ट पे रैंक अच्छी थी लाइक क्या था गूगल में सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया एंड लाइक आप आपने कितने राउंड्स दिए लाइक व्हाट वाज द जर्नी बेसिकली फॉर द गूगल राइट. yeah. Okay, so like in my seventh semester, like most of the people in seventh semester, when like when आपको Google के बारे में आपको सोच के लगता होगा that it's too difficult for me, I can't crack it. I was also in that category that I will be not able to like crack Google interviews, but my family supported me that I should at least try. ओके So ग्रेट. like someone reached me, like someone reached me 1 year back, and ओके. I just, it was a like it was kind of luck for me only. Like I just opened Facebook message and I saw that someone reached me, and I saw after 1 year. So then I ओके. like, he was like a mentor. He used to mentor students. He at that time he himself did, like he was himself software engineer at Google. ओके. ओके. So then ग्रेट. I told him about my Microsoft internship and Amazon offer and my current code forces and code shift rating. So
he liked the rating, so he said that I will refer you for the Google Mhm. interview, Mhm. software engineer position. Okay. So Okay. and he also provided me some guidance how to prepare, shared some Okay. resources with me. Great. Okay. So so he referred me there, Mhm. and Mhm. then I got the mail from the recruiter. Mhm. Mhm. So Okay. that's how my Great. process began. Mhm. Mhm. Okay, so this was your like you got the Google opportunity and like okay, so after that your interviews were there and so how many rounds of interviews were there just like for full time SD? Okay, so there were many rounds. Okay. Like Yeah. first was four interviews, then Okay. four technical rounds, Hmm. one googliness round. So total 6 rounds were there. Oh, total 6 rounds were there for the full time opportunity. Okay, so that was great, and you told that in Google interviews also like it's all about learning lead code, right? Like solve like it was it like more lead code problems or more competitive coding problems? Like, can you just give a brief about that? Just Okay, so for me, like hmm. the case may be different for different people, but Okay, okay. for me, like lead code, like these all questions, it is not about competitive question or Hmm. lead code question. So lead code consists competitive question only, and code Okay, forces consist interview questions also. okay, Like okay. they contain both of the things. The Got it. thing is, you should know the concept. Right, right, right. Yeah. Like your concept should be crystal clear, then you will be able to solve any question, right? That's the main case. Yeah, like crystal clear, and like you should know the time complexity. Okay. I will not say crystal clear. Okay. Don't go very deep. Okay. Okay. Otherwise, like Okay. so Great. only like you should know time complexity, you should know Hmm. some questions on the like topics. The thing is Hmm. like it is about you prepare around, even not for normal exams also you prepare 1,000 questions, and out of which 10 questions are asked. So Hmm. Hmm. same with coding also, for 2 years you are preparing, you are doing lots of question, variety of question. Hmm. Don't only do focus only on the same topic. You started DP and you are only doing DP. That's not a good strategy. Try different topics, trees, like try to cover almost all the topics, Okay. variety of Okay. question. So it is like you prepared about 2,000 questions, bucket of question, both Hmm. easy and like all kind of level, easy, medium, hard. Hmm. And then among that bucket you don't know which type, because there is a thing about Google that they don't ask repetitive question, they ask Right. always Okay. new question. Okay. So it is like then you will click like the when the question, because you are not given a ample time, you are given the interview is 45 minute long, and you are asked two questions, one Hmm. medium level question and one hard level question. Hmm. So you are not getting lots of time. So one thing is like you prepare, and then you will try the concepts you are revising since 6 months or 1 year, and Okay. then you are able to solve. So it is not about lead code or Hmm. code shape like or competitive programming. But yeah, lead code is a good platform, because Okay. see, there's a difference between, like when I was in my third year I was confused कि ये Hmm. competitive programming और interview preparation में difference क्या है. So Okay. there is a difference. When you Okay. do competitive programming, you Hmm. don't care like it is a optimal, like most optimal solution. You don't care about the name of the variable, you don't care about the approach, you just care about Okay. the answer, and such that it is done in the minimum time. Like Hmm. you code minimum time, you get success, like you get correct answer. But Okay. when it comes to interview, Hmm. you like before coding, the interviewer expect that at least you give the whole approach, like you tell him the whole approach. And after Okay. that, when he's completely satisfied that this is the approach, this is the time complexity, then he will say okay, let's do coding. Got it. So Hmm. there's a difference in interview preparation and competitive programming. But yeah, Hmm. slightly there's also intersection, and there is also Got differences. it. Got it. So Okay. I can, Like. like I will recommend in the starting start with competitive programming because it is interesting, and Mhm. later during like when interviews are approaching, start preparing for interviews. ओके लाइक ये काफ़ी बड़ा आंसर हो गया फॉर गूगल सो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं लाइक यू हैव वर्कड विद 3 कंपनीज राइट लाइक अमेजोन में भी काम किया माइक्रोसॉफ्ट में पहले काम किया दैट वाज रिमोट लाइक वो तो रिमोट था ड्यू टू कोविड एंड Yeah. अमेजोन वो भी रिमोट था
सिक्स Yes. मंथ्स एंड गूगल भी अभी तक Google. आई गेस रिमोट चल रहा है, ठीक है। Yeah. तो आई जस्ट वांट टू आस्क, लाइक मैं ऑफिस कल्चर तो नहीं पूछ पाऊंगा कि एक्चुअल ऑफिस में आके कैसा कल्चर होता है, बट या बट आई कैन आस्क लाइक रिमोट में व्हाट यू फील कि आपको किस में ज्यादा लाइक अच्छा पॉजिटिव लगा काम करने में, और लाइक सब में अच्छा लगा या सबका डिफरेंट कल्चर था, लाइक व्हाट वुड यू से ऑन दिस? Okay. Firstly, like मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक तो किसी भी कंपनी में नहीं थी, इवन इन ओके। माइक्रोसॉफ्ट 2 मंथ्स, देन इन Amazon 6 मंथ्स, एंड गूगल में भी अभी सिर्फ 5 मंथ्स ही हुए हैं मेरे को। ओके। तो ऐसा तो नहीं है लाइक आई कैन गिव अ वेरी गुड, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन गिव वेरी गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई कैन लाइक ऑन माय एक्सपीरियंस बेस इट इज अबाउट लाइक इन एवरी कंपनी देयर एग्जिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टीम। तो ऐसा राइट, नहीं है सही बात। कि अमेज़न में सारी टीम्स ऐसी ही होती है, माइक्रोसॉफ्ट में सारी टीम में बहुत अच्छा कल्चर होता है, गूगल में सारी टीम में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा गुड वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ऐसा नहीं है। Like it is depending on the team, on the responsibilities of the team, on the type. Like if they get too many tickets, like depends on the work of the team. So for me, like because interns को थोड़ा रिलैक्स रहता है, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाता है, एंड ओके। इवन गूगल में भी स्टार्टिंग में नूगलर्स को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाता है। तो मेरे लिए हमेशा इतना नेवर, इट वाज नेवर अ टफ, इवन लाइक Microsoft, Amazon, and Google, everywhere till now, I'm always like, if I need any help, people are always there. People are always like too friendly, and ओके। during these like all three internship, I get to meet too many good people, ओके। and रिमोटली। yeah, remotely, obviously. या। Get to meet ओके। virtually, and other than this, like about like work, like people say that work life balance, what is work life balance? Amount of work you are given, time, like time you have to work in the night or you have to work in the evening, like, so this is about work, or even the complexity of work. So it is like uh, when Microsoft was my starting internship, so I was very like very noob. So it was difficult for me in the beginning, but the mentor was really helpful. Like ओके। she kind of always there, very supportive. But at Amazon, because after 2 months of Microsoft internship, I got some experience. So I was better at Amazon than Microsoft because ओके। I got the यू गॉट experience. दैट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट, तो थोड़ा आइडिया था कि अब कैसे काम करना है अमेजोन में, राइट? हाँ, लाइक बिल्ड विल्ड करना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता था कि इतने बड़े कोड में क्या-क्या है। अभी ओके। थोड़ा-थोड़ा पता चल गया कि अच्छा ऐसे होता है, यहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनी में ऐसे काम होता है। फिर अमेज़न में आके थोड़ा सही लगा, और अभी गूगल में फिर से लाइक गूगल इज़ अगेन गूगल तो या थोड़ा है, लेकिन या बट यार लाइक आप लर्न करते हो ग्रेजुअली, ऑब्वियसली लाइक स्टार्टिंग में तो लाइक किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो यू हैव टू रैंप अप, देयर इज अ रैंप अप प्रोसेस जिसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है, सबको ही टाइम लग जाता है। ओके। या इन ग्रेट। अ न्यू कंपनी यू विल टेक एट लीस्ट 3 टू 4 मंथ टू रैंप अप। सो ओके। ओके। ग्रेट। सो ठीक है यार, ये भी काफ़ी अच्छा आंसर था। ठीक है, तो लाइक हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपसे लाइक डिफरेंट कंपनीज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो किस लेवल के। नाउ द क्वेश्चन कम्स लाइक आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी लाइक फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंटरव्यूज, ठीक है, तो लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, लाइक आपने कभी माइंड बनाया होगा लाइक मुझे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लाइक ओके, सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन दैट, लाइक आपने किन किन रिसोर्सेज का यूज किया, ठीक है, आपने कौन कौन सी वेबसाइट फॉलो करी, आपने मतलब कहाँ कहाँ कोई यूट्यूब की प्लेलिस्ट या आपने कोई बुक पढ़ी, यू टोल्ड दैट यू यूज्ड टू रीड कोरमैन, राइट? तो यस। आपने लाइक क्या क्या किया इस प्रिपरेशन जर्नी में, लाइक जो भी आपकी जर्नी थी, राइट? अच्छा, लाइक एक बात है, जैसे कि कॉर्मेन मैंने रीड की, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज अबाउट डूइंग, राइट। लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन इम्प्लीमेंट। जब तक ऐसे कोड रीड करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक खुद से कोड लिखोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, लॉजिक लिखोगे, तभी सीख पाओगे। दैट राइट। माई टीचर यूज टू से, my teacher used to say that until you keep on like reading code from Geeks for Geeks and writing it, you will not learn until you take your pen and pencil and start writing code with your mind, then only you can learn. तो ये तो है। तो ऐसा भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, बैठ गए कोड लिखना, ये भी नहीं सही बात। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि अच्छा सेगमेंटरी होता है तो ऐसे ऐसे होता है, इसमें इस टाइप से डिवाइड होता है, इधर मैक्सिमम मिनिमम, अभी कोड ओके। खुद लिखना है। एंड क्या हो सकता है कि नहीं लिख पा रहे हो, ओके। क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं, बड़े बड़े लाइक या बड़े बड़े स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है, लाइक स्टार्टिंग में सारे कोड नहीं लिख पाते, या राइट?
इतने एक्सपर्ट लोगों ने इतने बड़े बड़े एल्गोरिदम तैयार करे, हम लोग कहाँ लिख, मतलब हर कोई कहाँ हम्म, लिख पाते हैं, तो वे ठीक राइट। है, एटलीस्ट यू ट्राई। तो व्हेन हम्म, यू ट्राई तुम्हारा माइंड ग्रो होगा, एंड बिल्कुल। देन लाइक जब माइंड ग्रो होगा, एंड देन इवन यू आर आफ्टर, लाइक आफ्टर ट्राइंग यू आर सीइंग द हम्म, सॉल्यूशन, यू आर हम्म, आस्किंग योर फ्रेंड, then हम्म, you will understand better than in the first attempt you go राइट, and see the answer. राइट, So राइट। comparatively, always like first try yourself, हम्म, and if you can't see, all you can find a answer from a friend, or Geeks for Geeks is always there. So ओके, like now I will tell the specific resources which I refer. राइट, ओके, ठीक है। Firstly, I recommend everyone to get a good mentor or teacher. Like in ओके। my case, I got a really good college teacher. हम्म, So if you are not getting a, if you feel that sometimes क्या होता है कि टीचर अच्छा भी होता है, बट आपका मतलब आपको नहीं, मतलब हर टीचर को हर स्टूडेंट हर टीचर की बात नहीं समझ पाते हैं। राइट, सही बात है। तो हम्म, ऐसा भी ये होता है, तो आप लोग ऐसे कुछ पेप कोडिंग या कोड ब्लॉक्स या कोडिंग निंजा इस टाइप के अगर अपने फ्रेंड से, मतलब मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन आप पूछ हम्म, सकते हैं कोर्सेज, या यूट्यूब हम्म, पे बहुत ही अच्छी अगर आपको प्लेलिस्ट मिल जाए जो आपको लगे कि इससे मेरा काम हो जाएगा, आप वो ठीक है। फॉलो कर सकते हो। तो हम्म, वेरी एसेंशियल कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मिल जाए, चाहे वो ओके। ऑनलाइन रिसोर्स हो या कोई फिजिकल क्लासेस आप जाके अटेंड कर रहे हैं। हम्म, तो फर्स्टली एक गेट अ वेरी गुड टीचर, हम्म, with whom you can learn almost like all the concept, like हम्म, DP trees, segment tree, then normal array, हम्म, everything, time complexity. So this is essential. After that, now his part is completed. Like the हम्म, teacher's role has been completed. Now it is your turn. हम्म, So you can start with code shift. Like अभी क्या है कि in ठीक है, motivation है that you want to go in a big company, but still it feels it gets boring sometimes. So हम्म, for motivation you can start with code chef long challenges. तो ओके, अभी क्या है ठीक कि है। everyone from college is doing, तो एक inspiration रहता है कि everyone is doing, let's see, and if in after 10, like it is a 10-day long challenge, हम्म, code chef हम्म, long challenge, if you don't know. हम्म, तो उसमें आप जाके देखिए, और आफ्टर 10 डेज जो क्वेश्चन आपने ट्राई किए कंपटीशन में और आपसे नहीं होते हैं, देन यू हम्म, कैन ट्राई आफ्टर 10 डेज, you can discuss with your friend, don't discuss during या competition. Be या like, राइट, राइट। be super honest to yourself, because हम्म, कहीं नहीं लग रहा है ये रेटिंग, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो ना तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा आपको। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So after 10 days, you can reach to your friends, you can reach Code Chef, like they also add answers after competition. हम्म, So you can start with this. I give for continuously 7 to 8 months. I without giving a break. I हम्म, always give. I always like it. It starts on the first Friday of the month. So I was always excited कि आज शुरू होने वाला है. ओके, तो आप भी राइट। ट्राई कर सकते हो। कोड शेफ के अलावा आप क्या है कि कोड फोर्सेस में 2 आवर्स लॉन्ग कॉन्टेस्ट होते हैं, और राइट। 2 आवर में क्या होता है कि आप थक 3 आवर्स में थोड़ा हम लोग बोर हो जाते हैं दिमाग से कि अभी कितना कोडिंग है। तो हम्म, आप 2 आवर में इतना बोर नहीं होते, तो आप 2 आवर के कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट दे सकते हो, डिप 3 दे सकते हो। तो धीरे हम्म, धीरे उसमें लर्न करो, उसमें जो क्वेश्चन नहीं होते उन्हें बाद में सॉल्व करो। तो इससे हम्म, अगर धीरे धीरे रेटिंग इंप्रूव होगी तो कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, जो कि राइट, बहुत राइट, इंपॉर्टेंट है राइट। किसी भी चीज़ के लिए हम्म, कॉन्फिडेंस। तो कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, एंड अभी ये जो चीज़ें हैं ये सेकंड या थर्ड ईयर में कर लिया ठीक है, लेकिन हम्म, अभी जो फाइनल ईयर में आ गए अगर आप, तो फाइनल ईयर में अभी कोडिंग कोड फोर्सेस कोड शेफ नहीं करे तो मेरा मेरा रिकमेंडेशन है ना ओके, करके ठीक है, लीड ठीक कोड है। और इंटरव्यू बिट में ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ओके। नाउ नाउ टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज डन, नाउ द era of interview preparation has इंटरव्यू प्रिपरेशन started. स्टार्टेड, ओके। अदरवाइज ओके। अभी सीपी करने का टाइम नहीं है, अभी थर्ड हम्म, फोर्थ, मतलब फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम है, तो लीड कोड की तरफ डेविएट हो जाइए। ओके। तो यही मतलब मेरा तो यही प्रोसेस रहा था। हम्म, और मैंने क्या था, एक मैंने क्या होता है कि अभी इंटरव्यू से पहले इतने सारे एल्गोरिदम होते हैं, दस हम्म, बीस काफी, जैसे कि राइट। हमारा हो गया एमएसटी कैसे निकालते हैं हमारा, हम्म, ठीक है, तो मैंने क्या एमएसटीज किया के था। हाँ यार, बहुत सारे एल्गोरिदम्स लाइक होते हैं ग्राफ्स में, लाइक एंड एरेज में सर्चिंग सॉर्टिंग के भी काफी एल्गोरिदम्स होते हैं, तो आपको या लर्न करने पड़ते हैं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एनसीआर कैसे निकालते हैं, एनसीआर, राइट, तो राइट। ये क्या है काफी स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है। तो हम्म, मैंने क्या किया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक गूगल डॉक बना ली थी अपनी। ओके। उसमें इफ आई रीड वेरी स्टैंडर्ड एल्गोरिदम आई यूज टू ऐड देयर। ओ, तो ओके। before interview I just download the PDF in my phone, and while traveling also I ओ, used to like scroll over my phone. and you So can get through all the device, algorithms in a short time, right?
और इतनी बार रिवाइज करके तो पता ही चल गया था, मतलब पता चल क्या जाता है, होता है, राइट। क्योंकि बार बार इंटरव्यू एक दो तो नहीं होते, बार बार ही होते हैं। बार बार होता है, राइट। तो हो जाता है, ग्रास्प हो जाता ओके। है, और थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड, वरना क्या होता है, ओ मुझे ये वाला एल्गोरिदम तो आता ही नहीं, एकदम से इंटरव्यू से पहले लगता है। तो राइट। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में हेल्प करता है, ऑल्दो मैंने, मतलब मेरे को पता है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनमें से, मेरे से इंटरव्यू में, पर एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे को आता है। ओके, ओके, तो राइट, आप गुड। लोग वैसे बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नोट्स वोट्स बना के रख सकते हो कॉन्सेप्ट्स के भी, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। तो एंड टाइम में एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ने से अच्छा है यू विल हैव द You नोट्स, will have the notes, right? Yeah. यू कैन गो थ्रू दैट। तो Yeah, दिस like वाज माय स्ट्रेटजी। काफी लोग कहते हैं लाइक कोडिंग में लाइक नोट्स नहीं बनाना चाहिए, हमें खुद से समझना चाहिए, बट यार लाइक नोट्स बनाना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बिकॉज अगर आपको रिवाइज करना है तो आपके पास एक हैंडबुक काइंड ऑफ स्टफ है जिसे आप एक बार में आपने देखा, एंड आप इजीली उसे लाइक 15-20 मिनट्स में लाइक रिवाइज कर सकते हो बहुत आराम से। तो या लाइक क्रिएटिंग सम डॉक्यूमेंट और क्रिएटिंग नोट्स इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। ओके, ठीक है यार, तो यार काफी मतलब पता चल गया होगा लोगों को। एंड यार लाइक आपने लाइक कॉलेज में सीपी किया था, एंड आई जस्ट वांट टू नो, आई वांट टू लेट द पीपल नो दैट यू आर एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस, राइट? एंड यू आर करेंटली एक्सपर्ट। नो, ओके, आई एम नॉट करेंटली एक्सपर्ट, आई थिंक माय रेटिंग ड्रॉप्ड लेटर but you लेट। but you reached expert, right? Yeah. Yeah. Yeah, but you reached expert. Okay, so like not many people reach expert. They mostly lie in I don't people know. range or specialist range. But yeah, like can you let us know like कि आपने like CP में like you did code chef, and apart from that you did code forces, ठीक है? तो आपने कुछ सीपी के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, लाइक लाइक आप लाइक सीपी में ऑब्वियसली देयर आर लाइक फ्यू अदर यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइक कुछ अलग एल्गोरिदम्स, कुछ एक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स भी होती हैं जो हमें फॉर पर्टिकुलरली फॉर सीपी पढ़ने की जरूरत होती है, बट इफ यू आर डूइंग डीएसए फॉर इंटरव्यूज दैट डजंट रिक्वायर। तो आपने सीपी के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइक पढ़ा तो, बट कहाँ से पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या चीज थी लाइक फॉर सीपी बेसिकली? तो एक था, ठीक है, डीएसए के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पर हम्म। सीपी थोड़ा अलग होता है, मतलब हम्म। सीपी इज इम्प्लीमेंटेशन। तो हम्म। ये लाइक व्हेन यू आर लर्निंग ड्राइविंग, अभी कर सीख करके ही आता है, यू कांट कि अगर राइट। यूट्यूब की 15 वीडियो देख ली उसके बाद नहीं आप नहीं, कार चलाने बैठोगे हो चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक गाड़ी आप चलेगी पंद्रह ठुक बीस दिन जाएगी। जब तक आप या। 15-20 दिन ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे खाली रोड, हम्म। मतलब इस रोड पे, तब तक नहीं सीख पाओगे। तो राइट। सिमिलर विद सीपीयू आल्सो। तो पहले क्या है कि अगर आप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, हम्म। पहले दूसरे कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट दिया, नहीं हुआ, तो हम्म। अभी क्या है कि पता है ना ये नहीं हुआ, सो यू हम्म। कैन सी द आंसर्स ऑफ अदर्स आफ्टर द ओके, कॉन्टेस्ट। ओके। So you will like start to know that this is the approach, हम्म। this is how I answer. And one tip with like one CP is like करके आता है, and one हम्म। thing is very good, very important thing for me. So मैं क्या करती थी, I maintained a separate notebook, like उसमें ओके। मैं और कुछ नहीं करती थी, मैंने वो सिर्फ सीपी के लिए बना रखी थी, जिसमें हम्म। मैं like if I get the question, I don't हम्म। start coding directly, even if I know the like good, like ओके। I, if it is like a equal to b plus 2 c, then it is okay, I start हम्म। coding. But if हम्म। it is not, देन आई मैंने एक कॉपी अलग से मेंटेन कर रखी थी, उसमें मैं ना 2-3 केसेस बनाती थी, कि ओके। इसमें ये केस हो सकता है, इस इधर से ये एल्गो निकलता है, ये केस हो सकता है, इधर से ये एल्गो ओ। निकलता है। फिर ओके, मैं ओके। उसमें से मतलब उससे अपना सॉल्यूशन बनाती थी। तो ओ, आई विल सजेस्ट कि ग्रेट। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा वो बनाने में, लॉजिक हम्म। बनाने में, हम्म। बट इट you will get the like with the time you will हम्म। start creating your own logic, then when हम्म। you code। so अभी क्या है कि बहुत सारे साइड केसेस बहुत होते हैं हम्म। सीपी करते वक्त। हम्म। तो वो कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं हमने कोडिंग पहले सोचा, हमने लिख दिया, उसके साइड केस रह गए और फिर नेगेटिव में चली गई रेटिंग। या। तो हम्म। उसके लिए क्या है कि जब बना रहे हो ना अपना लॉजिक, तभी हम्म। साइड केसेस भी ले सोचे पहले कि सोच के चलो, एज साइड केसेस केस क्या लेके हो चलो। सकता। या। हाँ सॉरी, या। एज केसेस। एज केसेस, या। एज केसेस सोचे पहले कि क्या हम्म। हो सकते हैं, हम्म। और फिर लिखे, फिर दिखाया कि जो भी मैंने सोचा है वो उसमें लगेगा क्या, नहीं ओके। लगेगा तो ओके, आई हम्म। विल like I will change my algorithm to हम्म। otherwise I can add some if this is the condition then make this output. So हम्म। these side cases are like दे आर they're इम्पोर्टेंट। एंड कभी कभार क्या होता है ना कि लाइक लोग जल्दीबाजी में विदाउट चेकिंग एच केसेस सबमिट कर देते हैं आंसर, एंड उनका रॉन्ग आंसर हो जाता है, ठीक है? हाँ। सो बट फिर वो दोबारा देखते हैं कोड को, फिर वो एच केस ऐड करते हैं, तो उनकी रेटिंग मतलब जो आनी चाहिए थी इन फर्स्ट सबमिशन वो थोड़ी ड्रॉप हो जाती है उस चक्कर में। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा एच केसेस तो चेक करके चलो, राइट?
और उसके लिए नोटबुक बहुत सही है, मतलब नोटबुक लो और अलग ओके। बना के रखो, ऐसे मिक्स नहीं करो कि एक पेपर लेके आया हूँ मैं उस पे लिखूंगा। फिर क्या ओके। है कि लाइक यू आर समटाइम्स इवन इन द कंपटीशन यू आर सर्चिंग वेयर इज पेपर, वेयर इज समथिंग। तो अपना एक लैपटॉप लेके बैठे, पेपर और नोटबुक लेके बैठे और कंपटीशन में आराम से दे के रख दिया। तो दिस ओके। इज लाइक क्लैरिटी ऑफ माइंड। राइट 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 राइट। ओके यार, लाइक सीपी के बारे में यार काफ़ी डिस्कशन हो गया, एंड लाइक वी आर 35 मिनट्स। ओके, लाइक हमने 35 मिनट्स तक की स्ट्रीम कर ली है अभी। ग्रेट यार, काफ़ी कुछ लाइक लोगों को आइडिया लग गया हो। लाइक हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, लाइक गाइज यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस। लाइक वी व्हाट वी विल डू, लाइक हम एंड में क्यू एन ए करेंगे। लाइक आफ्टर दिस, लाइक मुझे एक दो क्वेश्चंस और पूछने हैं, उसके बाद वी विल डू अ शॉर्ट क्यू एन ए। ठीक है, उसमें वी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड लाइक वी विल डिस्कस ऑन दैट, राइट? तो अभी यार लाइक मेरे पास बस दो, लाइक एक या दो क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, लाइक लेट्स से इफ अ स्टूडेंट इज एंटरिंग college, okay, and he has like the student wants to pursue computer science and like he wants to excel in that, तो first second year में like student की क्या approach होनी चाहिए like in college? क्या फर्स्ट ईयर से वो डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दे, या एक्सप्लोर करे थोड़ा, या मतलब उसका क्या विजन होना चाहिए बेसिकली फर्स्ट सेकंड ईयर में? ठीक है, तो लाइक everyone takes different path, ऐसा नहीं है कि this is the path तुम्हें यही follow करना है, then life will be very boring. you ओके। should you should create your own paths. Like I am seeing some questions and some question like whether we should DSA only, whether we like we can do web development. So like I ये मेरा path था that I did competitive programming even in first year. Even in my first year I started with game development and then I did joined robotics hub. Like in the ओके। first year I did very less coding. तो like then and if someone like तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको कोडिंग ही करनी है इससे ही जॉब मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ कंपनीज के लिए क्राइटेरिया कि डीएसए ही है, लाइक होती हैं कंपनीज जिनका डीएसए ही रहता है, मोस्टली राइट राइट जाइंट कंपनीज का डीएसए ही रहता है राइट राइट क्योंकि राइट। पर ऐसा है कि अगर ये है ये आपको बना लिया कि मुझे जाना इसी कंपनी में है, जाना इसी जॉब पे है, तो फिर अगर उनका क्राइटेरिया ये डीएसए है तो ऑब्वियसली आपको डीएसए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। पर एब्सोल्युटली। ऐसा है कि अगर आपका है कि नहीं माई इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट ओनली, तो ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकेंड ईयर में बैठ के कोडिंग कर रहे हो, इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में, एक्सप्लोर वेब डेवलपमेंट and there are ample of like opportunities. Like I have my friends who are not very good, like who doesn't enjoy DSA much, so they got really good job offer and very like very compared to like in the market good high top offers they got. ओके ओके ओके। So it is ग्रेट। not that only coding is something which even in the third fourth year, not only first second. So ओके if you are ओके। not feeling like that you don't enjoy DSA, then you can see you can compromise with these companies. Like you can see if you have any dream company, you can see कि अच्छा इधर होता है तो I should prepare DSA, पर अभी तुम्हारे कि नहीं I enjoy blockchain only, so you can prepare like you can do blockchain and can see some companies where there is which are, opportunity for yeah, blockchain. blockchain developer, right right right. तो ऐसा Okay. नहीं है that everyone should go like to DSA only, where whichever feels interesting to you, you can do that, you can explore. ओके ओके। ग्रेट। सो लाइक या नाउ यार, लाइक अब जो थर्ड और फोर्थ ईयर के फोक्स हैं, लाइक जिनकी प्लेसमेंट आने वाली है ऑब्वियसली, लाइक जो करंटली अभी फोर्थ ईयर में है एंड जो थर्ड ईयर में है, लाइक व्हाट शुड दे डू? लाइक लाइक उनको अभी करंटली क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए, थर्ड और फोर्थ ईयर में है, थर्ड ईयर है तो अपनी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, फोर्थ ईयर है तो फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मेरा है कि लाइक विच एवर लाइक मोस्टली मतलब मैंने अभी कहा आपको कि यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, बट मोस्टली कंपनीज जैसे पूछती है, मतलब दिस इज द ट्रुथ। राइट। ट्रुथ, some राइट राइट राइट। some ask easy medium level question, some ask difficult level. तो मतलब सब लोग पूछते हैं अभी थर्ड फोर्थ ईयर में। तो आप लोग अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट, जैसे मैं अभी आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं किया, तो थोड़ा बेसिक कर सकते हो क्योंकि वो अगर कोई कंपनी रिएक्ट के मतलब रिएक्ट की प्रोफाइल के लिए लेने आई है ना फ्रंट एंड में विद रिएक्ट, दे आल्सो आस्क सम बेसिक कोडिंग क्वेश्चन आल्सो। राइट तो राइट आई राइट एम नॉट राइट। सेइंग कि बनो लाइक बनो एक्सपर्ट बनो एकदम कि कोई भी क्वेश्चन रख दिया मैंने सॉल्व करके दे दिया, ऐसे बनने की जरूरत नहीं है। बेसिक अपना बेसिक रिएक्ट, आना चाहिए। क्योंकि because you are good in React now, so you have specialization there, so you will get points there and get medium level coding experience, so that you can at least pass their first second round and
mostly React is asked in the later round, then you Right. can give React in the later round. To Mhm. reach the later round, you have at least some basic coding Mhm. concepts. Great, And great. also in third and fourth year for opportunities, although Mhm. like Go Careers is doing really great, they are adding so many opportunities on their Okay. Telegram group. But other Mhm. than that, you can also see, like, be active on LinkedIn. Mhm. I'm not saying spend too much time on LinkedIn, but Mhm. once or twice a week, you can see opportunities. You can follow the pages of your dream company, so that when they add, like when they Mhm. come up with some opportunity, you can at the right time you can find that. So you Great. can be little bit active on LinkedIn in your third and fourth year. ओके, ओके, दैट्स गुड। यार तो मेरे तो क्वेश्चंस ओवर हो गए, लाइक अब लेट्स पिक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट। ओके, so our very first question we see is from Ankit. Okay, is it okay if I do web dev rather than competitive coding? So what's your say on this? Like, Hi Ankit. So like I earlier mentioned also that if you are doing web dev, I like you can do two to three things. Firstly, find some company which don't ask DSA question, Mhm. so so that you can make that, like, go to that. If you are seeking jobs, maybe Mhm. possible that you are going for startup, Mhm. you know Mhm. better. So if you are like, you can go there, like, see. Otherwise, if you see that DSA to पूछेंगे ही, then you can Mhm. and you are in third or fourth year, so if you can start with basic DSA, you can start with lead code medium question. But Mhm. that too, like lead code medium question, um, so I will say in the beginning, because Mhm. you just started and till now you were doing web development, Mhm. and because the company you are seeking ask questions Mhm. regarding programming. Mhm. तो अभी क्या कर सकते हो, सीधा लीड कोड पे जाके क्वेश्चन करोगे तो टॉपिक्स रह जाएंगे. तो Mhm. पहले ना थोड़ा गीक्स फॉर गीक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड कर सकते हो. Read कर लाइक लो। आई एम Okay. सजेस्टिंग GFG. अगर Mhm. आपको और साइट कोई और अच्छी मिलती है तो यू कैन रेफर दैट. तो Mhm. आप गिग्स फॉर गिग्स से थोड़ा देख सकते हो, यूट्यूब चैनल्स देख सकते हो. लाइक मैंने एक आदित्य वर्मा की डीपी की वीडियो, लाइक Mhm. दैट प्लेलिस्ट, आई डिडंट फॉलो द, लाइक, Very famous playlist. या दैट्स वेरी पॉपुलर. तो Yeah. लाइक ऐसा था कि अभी मैंने जब देखी, वो मैंने फोर्थ ईयर में देखी, तो Mhm. मैंने तब तक डीपी प्रिपेयर कर लिया था. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग के एक दो वीडियो देख के मैं सिर्फ सीधा क्वेश्चंस गई, मतलब एक एक वीडियो प्लेलिस्ट की वीडियोस के क्वेश्चन, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन थे, Mhm. तो मैंने सीधा सिर्फ क्वेश्चन लगा लिए. Mhm. तो आपको मतलब ऐसे माइंड यूज करना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे दूं प्रोग्रामिंग का. तो Mhm. आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, सीधा ऐसे पहले घबराओ नहीं, Mhm. क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा. अपना Mhm. पेपर पे लिखो स्ट्रेटेजी की, दिस इज माय स्ट्रेटेजी, एंड उस पर थोड़ा फोकस करो. ग्रेट, ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है यार, अंकित का तो हो गया क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज फ्रॉम विष्णु। ओके, सो विष्णु इज सेइंग, आई डोंट नो डीएसए, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू मैनेज इट? ओके, तो आई डोंट नो डीएसए, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू मैनेज इट. हम्म, मतलब विष्णु, आई डोंट नो व्हिच इन व्हिच ईयर यू आर. लेट्स सपोज यू आर इन थर्ड ईयर. no, no, he is in final year. He has mentioned in the last. Okay, he has mentioned in the ओके. last, I'm in final year, I'm not good at DSA. Should I focus on that or technology related like React JS or Power BI, something like that? Yeah. So Vishnu, I suppose that in the starting 3 years you did something. You explored some field, so you can get, like, you can search for those companies which are seeking, which have opportunities for that field. For example, you focus on web development, you can search for web development. And if you, like, other, and regarding that you don't know anything about DSA, तो अभी क्या है, लाइक इफ यू आर फ्रॉम CSC, सो पॉसिबली आपके करिकुलम में रहा होगा DSA. तो आप एटलीस्ट उसके टॉपिक्स देख सकते हो, बेसिक बेसिक की क्या क्या होता है. और थोड़ी बहुत लाइक लीड कोड पे फिर इजी मीडियम उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो. तो अग, अभी क्या है कि विष्णु सेड यस, सो विष्णु मतलब आप CSC में हो, आई एम अज्यूमिंग. तो आप देखो वो करिकुलम में क्या क्या सिलेबस था. इफ यू आर इवन इन EC, then you can say ask someone, CSC student or friend, syllabus, and from that syllabus you can see the topics, very basic common topics, and from the common topics you can read a little bit at GFG. Like you can even solve questions there. But I don't find GFG UI that friendly to me. That, like, that's Okay. my opinion. Mhm. Maybe it has been improved over time. Mhm. So
You can try questions on lead code, but Mhm. you can at least see that there is a very good like concept explanation on GFG along with some example question. So Mhm. you can start with that. You can see the curriculum, and then you can start with the topics, and then you can do some practice on lead code. Mhm. Okay, great, very detailed answer, right? Yeah, and one Yeah. thing also, like if you think that these like graph entries will be too much for you for now, you can start with basic topics, medium level question topics, very basic DP, linear DP. Don't go into 2D DP directly. Start with basics. Then, if you complete the basic, go to medium level. And yeah, all the best, Vishnu. Okay, I guess the questions from the chat are over. Okay, let us pick some questions from our Telegram group. Okay, so give me just time. Like I added a post in a Telegram group, so let's get some questions from there, right? Uh, okay, so okay, the very first, okay, the one question is how to ask for referrals. Okay, and does referrals help one to get an interview by any chance? Like this is one question we are getting. Okay, so in my case, like I didn't ask for any referral in my Hmm. life. Hmm. Okay. Um, like even if I did, तो मेरे को reply नहीं आया होगा. तो Okay. तो मतलब the like from the person I got the referral, I like when that person reached to me, तो मैंने Hmm. like I just told him about my code 4 their code shift rating, so he referred me. अभी लेकिन इफ सम लाइक अगर मेरे को कोई रेफरल कहता है मांगता है तो मतलब मेरा रहता है कि इफ यू कैन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन अप्रोच me, but yeah, like approach anyone on LinkedIn, and Hmm. then you can at least provide, if you are like if you are asking referral for web development, then provide some resources for his or for him or her, so that he can see कि अभी आप कितने अच्छे हो वेब Hmm. डेवलपमेंट में. Hmm. If you are good in CS, मतलब if you are good in algo ds, Hmm. give him your code chef code forces link. तो Hmm. रेफर करने का यही है कि आप जाके लिंक्डइन पे अप्रोच कीजिए दो तीन मतलब जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड है उसके एम्प्लॉय को. Hmm. उसके बाद अपना रेफरल अपना मतलब अपना रिज्यूमे दे दीजिए, और Okay. साथ में रिज्यूमे में अगर रेटिंग्स इंक्लूड कर दोगे, अपना वर्क इंक्लूड कर दोगे, दैट्स इनफ. Hmm. सो इफ दैट पर्सन इज ओपन फॉर रेफरल, ही विल Hmm. see your message, and if he's not, then maybe he will reply with some message Hmm. that he is not open for that, and if he is not, like, then you are like seeking 2 3 people, so I hope Okay. you Okay. will get the referral. या लाइक मैं इसका थोड़ा सा एक आंसर दे देता हूँ लाइक इस Yeah. चीज़ का. लाइक लिंक्डइन पे या लाइक लिंक्डइन पे यू कैन आस्क फॉर रेफरल. ओके, लाइक first of all your message that you are sending should contain details in all of like in a single message. like आपको ऐसा नहीं करना है like पहले आपने हाय भेजा, then you are waiting for someone reply to say hi, then you are asking how are you. Okay, then you are sending. Okay, so this would like make the process too late. Okay, so it can happen that that in that duration of time the opening might get closed. Okay, because today the openings are getting closed in very less time because there are a lot of applicants. Okay, so they get a number of applicants and they just close that opening. Okay, so a better way would be like you can just directly DM that person in a single message like, okay, my name is this and I currently study in this and this college, and I have this my like I have this like I have learned this and this tech stack, and my achievements are like something. So you can just describe some all the things in a single message. Like there should be some unique point about you. Okay, let's say if you have done some contribution in open source, there you can mention you have done contributed in these and these organizations. If you have done good CP, you can explore, you can say that, okay, I have this much and this ratings in CP. If you have done like you can say if you have done some sort of web dev projects, you can just link those projects and you can say. And apart from that, yeah, always send your resume attached in that particular message and along with the job ID. Okay, don't say someone directly, okay, refer me for the role. Okay, but the row for that particular role you need to send that job ID. Okay, job ID is very important. Otherwise, like किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको जाके वो पोर्टल पे देखे कि आपके लिए सूटेबल जॉब कौन सी है फिर जाके आपको रेफर करे. ओके, सो ये काम आपको करना पड़ेगा कि आपको किसी कंपनी के पोर्टल पे जाके, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर Amazon. ओके, यू गो फॉर Amazon पोर्टल एंड यू सी, ओके, लाइक ये सारी ओपनिंग्स है एंड दिस ओपनिंग इज गुड फॉर मी.
तो you just note that job ID and you can just DM that person, like एक एक person को DM ना करो, 3-4 person को DM कर दो, like so that your probability gets increased to get the referral. ओके, सो जॉब आईडी रिज्यूमे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अपना डिस्क्राइब भी कर दो, मैसेज हाय हाउ आर यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एंटरटेन करे देन आपको रेफरल दे, राइट, बिकॉज पीपल आर वेरी बिजी दीज डेज, ओके, लाइक काफी काम होता है लोगों को, ठीक है। Really good answer. ठीक Yeah, है। this should be like don't send hi. या लाइक ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है मैंने, लाइक कुछ लोग डीएम करते हैं लाइक ओके हाय हाउ आर यू, फिर जाके मैं लाइक आई डायरेक्टली आस्क देम ओके लाइक व्हाट बेसिकली हेल्प यू नीड, राइट, तो दे टेल मी डायरेक्टली ओके, लाइक कुछ लोग डायरेक्ट डीएम करते हैं, सो दैट्स गुड, लाइक मेरा टाइम सेव होता है। उसने बोला ये जॉब आईडी है, मैं गया जॉब पोर्टल पे, लाइक मैंने रेफर कर दिया, अगर वो जॉब आईडी रेफरल के लिए अवेलेबल नहीं है तो मैंने उसे बोल दिया लाइक दैट्स नॉट अवेलेबल, यू कैन सेंड मी सम अदर जॉब आईडीज, तो इससे काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो आई विल जस्ट पिक 1 or 2 more questions. uh, Okay, I'm having 2.5 years of, okay. Okay, just wait. How to be updated with all the openings? Okay, so one is saying like how to be updated with all the openings. The popular ones have enough applicants, so success ratio is pretty low. But there are some good companies whose openings don't get enough traction. How to identify those? Okay, so basically over here, what we can do is just wait. Okay, can you answer this, Nana? Like, what do you feel like where you can get to know like how many openings are there? Like get to know about openings, okay, like we are doing this work through Go Careers, but let's say in your like earlier in your third and fourth year there were no Go Careers, right? you So what was your like basically like approach for that? हाँ, सम लाइक ऐसा नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ है अपने दोस्तों से अच्छा कनेक्शन रखो, Mhm. सो दैट सम अपॉर्चुनिटी कम तो वो आपको शेयर कर दे। क्योंकि ऐसा अभी क्या है Okay. कि मोस्टली अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो Mhm. आप ही तो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, पूरा बैच अप्लाई कर रहे हैं। Right, तो right. अभी आती है तो फिर सभी मैंने देखा है मोस्टली किसी पे एक बच्चा करता है, सारे ही Mhm. कर देते हैं। Mhm. तो थोड़ा कनेक्शन अच्छा when और मैंने आई हैव स्टिल लाइक आई आल्सो सीन दिस कि सबने अप्लाई किया एंड 2-3 पीपल लेफ्ट, तो वो लोग Oh. पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो वो लोग मत बनो। Mhm. Mhm. ऐसे Mhm. एक्टिव रहो कि अगर कॉलेज में कोई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सी दिस। और जो Mhm. अभी आप कह रहे हो दैट दे गेट लॉस्ट, Mhm. so मतलब one reason can be the person who is making those like adding those opportunity, they Mhm. are not announcing it well, and Mhm. like otherwise how can it be lost, like it Right. can be Mhm. it should be go go to the right people who Mhm. deserve some job, who deserve that job. So Mhm. it should not be lost. And one thing, the like LinkedIn is created for this, like for this objective only. Mhm. This Mhm. I think that Right. it is created for this job seeking opportunity only. So be active Mhm. on LinkedIn. Don't waste Right. time, Right. but be good, like Okay. spend some productive time there. Okay, so this is the last question we are taking. Okay, we have a question from Siddharth. Hi, I am in my pre-final year of college at JIT and contributing to GitLab for GSOC and started basic DSA. Any tips? Okay, like you need tips regarding basic DSA. Mm-hmm. Okay, so I think Anubhav, you can, because you are a GSOC, you like clear GSOC. So I Okay. think this No, question I'm not a GSOC. I cleared GSOC, right? we call you Okay. GSOC, so you Okay. can answer it better. Okay, if I tell you like what you can do is contribute. Okay, you are contributing to GitLab for GSOC, so that's great. Like keep on contributing, create a good proposal, get in touch with those mentors. Okay, and try to do more pull request in those. Try to contribute more. So that's a one point for your GSOC. And if you were starting with basic DSA, okay, yeah, you can simultaneously start because let's say if you are planning for some companies which ask DSA, then you have to prepare DSA, right? So in college, most of the companies which come ask DSA, most of the companies, okay. So for that you can just like learn from any of the playlist on YouTube, and if you want to take any course, that's absolutely fine, okay. Like some people say that okay, courses are not like why we should buy paid courses or something like that. If you get some sort of knowledge from there, so there is no harm in like investing money in some course, okay, because some people learn that okay, some people take those paid courses more like they seem more valuable
to them, and they give them more motivation. Okay, because they have invested some money, so need to get something out of there. Okay, but sometimes what happen is that, like, free material, they just ignore that stuff. Okay, like, I'll watch it later, I'll watch it later, I'll something like that. So if you need to go with that particular course, or if you are okay with playlist also in YouTube, so that's absolutely fine. And yeah, just prepare simultaneously for the college placements also, because in placements you would be mostly being asked about DSA only. Okay. Okay, I guess that's fine then. Okay, so thank you, Nana, for our first tech podcast, for coming at our first tech podcast. It was great to have you, and we had a good audience over there who asked very valuable questions. Okay, and yeah, thank you very much, Nana, for coming. Thank you, Go Careers, and please, if you like, if you are seeking, if you are someone who can't be very active on LinkedIn, you can go like join Telegram group of Go Careers, and you Yeah. can find, so like they add lots of opportunity there. They Mhm, will add the description, like they will add the link in the description, so you mhm. can join through that. And thank you, Go Careers, for having me. Right, right, right. Okay, great then. Bye, guys. We are ending the stream. So just subscribe to the channel, okay, and also our Telegram group and our LinkedIn page also, so that you all can get benefited. Okay, and we will be coming with such kind of podcast more. Okay, and if you want to connect with Nana, we have her LinkedIn profile linked in the description. You can send a request and ask for mentorship or guidance. If she's available, she'll surely be happy to help you. Right? Okay. Great, guys. Bye bye.